वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते जयतं सुरता उपांगोर मामंदा मतेर्गति मत्सर्वस्वा पदम्बुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृन्दरण्या कल्पाद्रुमदा श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीला गोविंद देवो पृष्ठलिभि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमन् रसा रसारंभि वंशिवता तथा स्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर् गोपीनाथा श्रिये स्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Prabhu, because many of them haven't been yesterday, should I give a synopsis? Or? Yeah, just short. And from yesterday, some came, no? Yes, all. Oh, mix, so I can't recognize. Okay. All right. So, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu is Harinam Sankirtan Pravartaka, and he inaugurated congregational chanting of the holy name with love, in love of Godhead, Prema Harinam Sankirtan. जैसा कि हम सब समझ करते हैं चैतन्य महाप्रभु वो रूप में प्रवर्तक है विशेष रूप से और नाम संकीर्तन का जो प्रवर्तन किया उसमें भी वो प्रेम से नाम देना चाहता है. And the method of achieving this Prema Bhakti as per Chaitanya Mahaprabhu is Shuddhanam, chanting the holy name purely. और जब हम लोग नाम की बात करते हैं तो प्रेम की होती है तो शुद्ध नाम की बात वो नाम भी शुद्ध नाम. And we as followers of Chaitanya Mahaprabhu, we also want to have that same experience. और चैतन्य महाप्रभु की इस उनके आंदोलन में उनके अनुयायी होने के कारण हम लोग अपनी वही अभिलाषा है कि शुद्ध नाम का जप. And fortunately, the Chaitanya Shiksha or the instructions given by Lord Chaitanya are written down in books of acharyas. और चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं को आचार्यों ने उसको प्रदान किया. The same experience which Chaitanya Mahaprabhu had and how he was chanting, Sanatana Goswami with the help of Srila Gopal Bhatta Goswami have been written in Hari Bhakti Vilas. चैतन्य महाप्रभु स्वयं नाम का आचरण कर रहे हैं प्रेम का नाम के माध्यम से उसी अनुभव को साधन पाद गोस्वामी उन्हीं की इच्छा के रूप
वो और श्री गोपाल स्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक पुस्तक को And in Hari Bhakti Vilas, there are many instructions how to perform devotional service, and one of them is Japa vidhi, procedure for chanting the holy name. हरि भक्ति विलास में कई ऐसी विधियां बताई गई भगवान को सिद्ध करने के लिए, और उसमें से एक जो है जप विधि है, 17वां विलास. And in the beginning of Japa vidhi, it was described Purashcharanika, or the purification prior to performing Japa vidhi. और सबसे पहले उसमें जप करने के पहले पुरस्कार बताया गया, जिसमें कि हम लोग जप करने के पहले क्या शुद्धि की आवश्यकता है. So I hope everyone took bath. सबसे पहले बताया गया है कि स्नान. तो मैं आशा करता हूँ कि हम जितने लोग आए हैं सब लोग स्नान करके आए हैं. कोई है जो नहीं किए स्नान? If someone didn't take bath, please leave the premises. जो स्नान नहीं किए हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं है, वो यहाँ से जा सकते हैं. Actually, Lord Chaitanya is saying there is no hard rules and regulations in chanting Japa. However, if you want to get the highest benefit, then it's good to follow these rules. हालांकि जब हम कहते हैं कि इसके लिए कोई नियम नहीं, कोई बात नहीं नाम जप करने की, किसी व्यवस्था में किसी दशा, लेकिन अशुद्ध नाम जप करना है, सर्वोपरि जो इसका उद्देश्य नाम से प्रेम प्राप्त करना है, और ये सब. And yesterday we were describing some of these rules, and along with rules we described that there are different kinds of japa malas. And does someone remembers what are 3 kinds of japa malas? I knew that Chitis will raise this. Yes, please. Okay, how many beads is Uttama? 108, Madhyam is 54, and Kanishta is 20. Great. So you chant Kanishta Madhyam or Uttama? Uttama, wow. Yes. And he said the college is going to open such a student is very desirable to be there in such college. Yes. I realize, yes. Just like that sannyasi stole Nityananda, Prabhu will take it. जैसे कथा सुनी कितना लोगों के वहाँ पर गए किसी नाम से आए थे, उनको साथ ले गए, बोले वैसे ही मेरे को लेके जाऊँगा. We have a जो माला होगी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ. उत्तम माला वो है जिसमें 108 ताले होते हैं. मध्यम जिसमें 50 से ज़्यादा 54 उसका आधा, और उसका आधा 25 से ज़्यादा 27 वो कनिष्ठ. So we described also different details like how to choose asana, what kind of japas are there made of tulasi, amalaki, rudraksha. हमने कल ये भी श्रवण किया था कि कैसे तुलसी की माला, जप के अलग-अलग मालाएं अलग-अलग चीजों से बनती हैं, कैसे हमारा आसन होना चाहिए. ये सब जप के पहले की बात है. जप के पहले क्या निश्चित करना है? स्वयं की सफाई, मन की सफाई, हमारा स्थान ठीक हो, माला ठीक, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो. So this material we will provide, and then can be also translated maybe in Hindi for those who not speak English later. Prabhuji ने इसको हरिभक्ति दास से निकाल करके संगीत किया होता है स्थान पर, और उसके और शास्त्रों से जुड़ करके उनको हम लोग हिंदी में बात करके अभ्यास करेंगे और आप. And slowly we came to one section called Japa Gunaha, the criteria for chanting Japa. और तब आगे बढ़ते हुए शुद्धि के पश्चात और ये सभी स्थान और ये माला निश्चित करने के पश्चात जप के गुण, किस प्रकार के जप क्रिया के उसके गुण क्या हैं. And one of essential instructions in Japa Vidhi is from Mantrarnava. It says Mana Samharanam Shocham Maunam
mantrartha chintanam avyagratvam anirvedo japa sampati hetavaha. Activities such as controlling the mind, mana samharana. तो सबसे पहले उसमें आता है मन को नियंत्रित करना, मन को कैसे आत्मसंयम किया जाए, Shocham, striving for purity. और इसके लिए शुद्धि, शुचि, Observing silence, mauna. और उसके लिए मौन की आवश्यकता है, शांत होना. Mauna means not to speak things outside of Krishna consciousness, but also sometimes really not to speak. This gives the peace of mind and control of tongue. विशेष रूप से जीवा को नियंत्रित करने को शांत करता है, मौन करता है. और देखा जाए तो कृष्ण भावना भावित विषय वस्तु के अलावा और कोई भी विषय है उसे वो मान लेना चाहिए. There is one joke about Maunam, but I will tell you privately. इसके बाद हास्य एक रोचक है, वो बात बताऊं. Mantrartha chintanam, or contemplating the meaning of the mantra. और मन के अर्थ पर चिंतन करना, ये सॉरी मंत्र के अर्थ, जो मंत्र जपने वाले हैं उसके अर्थ, उसका अर्थ क्या है. Avyagratvam, exhibiting peacefulness. और शांत मुद्रा में रहना. Anirvedo, showing eagerness for chanting. और मन में बहुत उल्लास, उत्साह, मैं भगवान के नाम का आश्रय ले रहा हूँ. Japa sampati hetavaha. These are the qualities that enable one to attain the maximum benefit of japa. तब जाकर को ये जप संपत्ति, भगवान के नाम की संपत्ति है, तब उनके संपत्ति प्राप्त होगी. So in order to have good japa, we need to practice these qualities. तो अगर ये जप की संपत्ति प्राप्त करनी है, भगवान के नाम की संपत्ति, ये गुणों को हमको अपने बनाना होगा. And we should develop them by putting effort into them. We should not expect they will be developed in any other way. We need to put time and efforts to develop them. और इसके लिए बहुत प्रयास करें. ऐसा नहीं सोचे कि अपने आप ही बनाएंगे. इसको बहुत सोच करके और ध्यानपूर्वक ऐसे न करना होगा. With that definition, there is one wonderful definition of japa from Dhyana Chandra Goswami, which is saying, Mano madhye stito mantro, mantra madhye stitam manaha, mantra samayuktam etadi japa lakshanam. The mantra firmly situated in the mind. तो हमने भी श्रवण किया था. अभी हम लोग कल की चर्चा कर रहे हैं सचित रूप में कि ध्यानचंद गोस्वामी जो है गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य हैं, और वो बता रहे हैं कि ऐसे जप करें कि हमारा मन जो है वो मंत्र में बस जाए. The mind firmly situated in the mantra. मंत्र हमारे मन में और मन हमारा मन. Such a seamless connection of the mind and mantra is the characteristic of ideal japa. Ideal. ये आदर्श जप की विधि है. आदर्श जप कब होता है? जब मंत्र हमारे मन के अंदर बस जाए और हमारा मन मंत्र की पूरा आशय ले, दोनों में कोई भेद न रहे. So, mano madhye stito mantra, the mantra should be firmly situated in the mind, means that we meditate on the mantra. The mantra is in the mind, but the mind is in the mantra, means that we, with devotion, chant the holy name and remember the mantra devata, the presiding deity of mantra. मंत्र मन में है, इसका अर्थ क्या है कि हम मन से सदैव उस मंत्र के अर्थ और उसके बारे में मन कर रहे हैं. और मन मंत्र में है, इसका मतलब बहुत उत्साह से और बहुत गर्व भाव से, प्रार्थना भाव से हम मंत्र को प्रवेश करते हैं. इस प्रकार से मन मंत्र में और मंत्र. So who is the presiding deity of Mahamantra? महामंत्र के अधिष्ठाता देव कौन है? महामंत्र के अधिष्ठाता देव कौन है?
Radha Krishna. Krishna, 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 hai. That would be only Krishna. But it's Radha Krishna, no? Yes, Radha Krishna, definitely. So we meditate on them, we request Radharani to engage us in service of Krishna. जब हम ये करते हैं प्रार्थना तो हम विनती करते हैं कि श्री राधा की कृपा करके आप मुझे आप भगवान श्री कृष्ण युगल सरकार की सेवा निरंतर रूप से करें. So this instruction is so essential for our chanting. So I suggest that with this understanding, we try to chant one full round and try to focus on this instruction. And the previous of mantrartha chintanam, mana samharanam, controlling the mind, meditating on the meaning of mantra, and these two. उन्होंने कहा कि ये बहुत आवश्यक अंग है. ये शुरुआत में अंग जो है जब विधि बहुत महत्वपूर्ण है. इससे हमारे जब पर बहुत प्रभाव पड़ेगा. तो मैं कहने की सबको मैं विनती करता हूँ कि इस तरह से जब क्या करें. अपनी जो शुद्धि है पूरी शुद्धि उसको ध्यान रखते हैं. और जब इसमें हमारे कैसे हमारा भाव होना चाहिए, कैसे हमारा मन जब निर्णय जब हमारे मन इनको ध्यान रखें मुझे पता चला. Yesterday we were having one exercise and some of those elements you can use, but try to focus on these four or five instructions here and chant with that. Mano madhye stito mantro, mantra madhye stitam manaha. ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है. आज मैंने सुना है यदि चाचे का ध्यान रखें दूसरी शुद्धि और आसन स्थान उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हमारा मन मंत्र में स्थित हो और मंत्र हमारे मन में स्थित हो. इसको ध्यान रख के वो हम चलते हैं. All right, shall we chant one round? एक बार जपने के अंदर I hope you didn't come for Japa seminar without Japa. That would be strange. अगर जिनके पास जब की बात नहीं वो साथ में उंगली पर साथ में बोलते रहेंगे ध्यान रखते हैं. All right, shall we start? Shall we start? Yes. Prabhu? Shall we start? Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinane Namaste Saraswate Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Pashatade Shadari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Ram, Ram.
I didn't hear anyone, only myself. And you? You hear anyone? No? I heard only myself. Like that. Yeah. You heard myself or others? Yeah, chanting should be like that for yourself. The kirtan is generally more beneficial for everyone, but japa is most beneficial if it's done for yourself. तो जब इसी प्रकार से होना चाहिए, जब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वयं के लिए, और हमारी आवाज कोई और सुन पा रहा है, इस बात हम कीर्तन करें। जब केवल अपनी आवाज को हम सुनते हैं, स्वयं के आंतरिक रूप से उसको मनन करते हुए स्वयं को शुद्ध करें। This method of japa is very simple because we use the karmendriya, the working senses. Of course, whole body we engage by sitting and chanting and touching the tulasi beads, but the mouth is especially engaged. It's the essential part, one of three essential parts. Karmendriya, then Gyanendriya, the ears, hearing, and then in that way the mantra comes into mind. Mano madhya sthito mantra. तो इस सरल विधि देखिए कि समझना पड़ेगा इसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। सबसे पहले कर्मेंद्रिय हमारी जो निश्चित रूप से बैठना है इस आसन में, और मुख से हम बोल रहे हैं। मुख हमारी एक कर्मेंद्रिय है, जहाँ से हम एक महत्वपूर्ण अंग है महत्वचम में, और फिर ज्ञानेंद्रियां कर्ण हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे हम श्रवण कर रहे हैं, और उसके माध्यम से मन को उसमें स्थित करा रहे हैं, और फिर मंत्र को मन में और मन को मन में। इस प्रकार के ध्यान करते हैं हमें ये चक्कर। And then when mantra is in the mind, then we can meditate on the mantra. Then mantra madhya sitam manaha, mind goes, meditates on the meaning of mantra. और जब मंत्र मन के अंदर आ जाए तब मन को मंत्र में स्थित अर्थात उनके अर्थ के बारे में और तब उसमें स्थित करना है। इस प्रकार से मन को निकलता है। And then we can achieve this manu mantra samayuktam, the seamless connection between the two, which is the goal of chanting kirtaniya sadahari. Always chant. How do we achieve this in japa? By combining these two. और इस प्रकार से मन और मंत्र का संपर्क युक्ति अच्छे से हो जाए तब जाके कीर्तनीय सदाहरि उस सदा मन भगवान के नाम में जाए। So this is very important, this instruction. So in your daily life, kindly try to practice this, and I wish you very good results with that. You? I wish you very good results with that. इस प्रकार से अगर हम इसको प्रतिदिन नियमित रूप से इसको अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जब अच्छे सुचारू रूप से हो। So we spoke about some japa guna, ata, and now japa dosha, faults to be avoided while chanting. Yesterday we stopped here, so we'll continue with this. तो जब गुण के बारे में चर्चा की, अब हम लोग जब दोष है जब में नहीं करना चाहिए। Narada Pancharatra, in the Narada Pancharatra it is stated, chanting japa with a contaminated hand, while naked, with one's head fully covered, or while talking to someone, is simply useless. Apavitrakaro, you want to translate? Can you once again? Yeah, sure. Chanting japa with a contaminated hand. सबसे पहले हमारे हाथ जो है संध्या करने जा रहे हैं वो स्वच्छ होने चाहिए। Apavitrakaro is contaminated, can be dirty and also contaminated by touching nose, mouth, ears and things like that. किसी भी हमारे अंग को स्पर्श न किया और या फिर कोई ऐसे चीजों को जो गंदी तो स्वच्छ करके ही हमको रखना चाहिए। While naked, nagna. हाँ, नग्न अवस्था में नहीं करना चाहिए। So Naga Babas, they cannot chant. इसका मतलब जो नागा बाबा है वो क्योंकि वह हमारे
Shirasi, with one's head fully covered, means और ये face, हमारा, no? पूरा ये जो है it should not be covered. Means face also, no? Full head, yeah. हमारा ये मुख पूर्ण रूप से नहीं ढका होना चाहिए, जैसे अवले में ढका होना है। What? We had gone to Ahobilam one time. Ah. So our jeep, in between our jeep got broken down. So three of us, we stayed there in the jungle forest. Everybody went. There were so many mosquitoes and small insects were there. What we did, we covered the entire face, the clothes, and we all were chanting. So when somebody told me, if someone passes through here, he will say, they are Moodhak Babaji. Moodhak sabka Moodhak hua hai, Babaji andar se kar rahe hain. तो वैसे नहीं करना, we should not cover. It's written here. तो हम लोग को मुंह ढक के जब तो हमने धाम में बैठ के किया ऐसा। Pravrittopiva means with one's head fully covered. Pralapan, or while talking. और जब के समय वार्तालाप नहीं करना चाहिए। Jape yavat tavat such a japa nishpala mochyate. It's simply useless or fruitless. क्योंकि इस प्रकार से जब करने से उसका कोई फर्क नहीं। So उपयोगहीन है। So if you're doing something, don't speak with others, or while you're speaking with others, don't chant. Sometimes we take japa and we go around and we speak with devotees and Ram Ram, oh Haribol, how are you? So जब के समय बात न करें और बात करते समय जब करें, Nishpalam. क्योंकि वो निष्फल हो जाएगा। It creates actually disease mentality, kubhava. क्योंकि ये हमारे एक मन में एक कुभाव ला देता है। Bhaktivinoda Thakur is saying in Harinam Chintamani, it creates kubhava. भक्ति विनोद महाराज इसको हरिनाम चिंतामणि बताते हैं कि कुभाव उत्पन्न करता है। कुभाव, सुभाव, कुभाव, कुभाव। Kimcha, it is also said, one should avoid chanting mantras while talking. क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हो तो बिल्कुल चुप रहें। Vadana, walking, gachana, चलते हुए भी चलना करें। lying down, swapan, nanyat, स्वप्न में या सोए हुए में। kimapi, samsmaran, remembering something else. ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब कर रहे हैं और कुछ और स्मरण कर रहे हैं, कुछ और स्मरण करते हुए जब नहीं करना, ये बात नहीं कर बहुत करेंगे। In Nityananda Trayadashi, we spoke about smaran and 5 levels of smaran. So these 5 levels can help you also with this. It's very, very good, useful. तो नित्यानंद यूनिवर्सिटी में हमने 5 प्रकार के स्मरण के बारे में चर्चा की थी। तो हमें ध्यान रहेगा, वो हमें सहायता करेगा जब इस समय कुछ और स्मरण नहीं करते। If you can't control your mind while chanting and remember something else, then at least focus on Rupa, Guna and Lila of Krishna. तो अगर कुछ स्मरण करना ही है, अगर आप कुछ और नहीं सहायता नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्मरण आ रहा है, तो अच्छा हो कि हम भगवान के नाम और रूप को लीला के बारे में सोचें। And slowly come to Namartha Chintana, remembering the meaning of the name. और फिर क्रमशः हम जाएंगे इस स्तर पर। सबसे अच्छा स्तर क्या है? जब किसी समय कुछ सोचना है, मन करना है, क्या करना है? नाम के अर्थ पर। जो वो नाम का अर्थ है, जो मंत्र जब है उसका अर्थ, केवल वही उसी में विचार है और कुछ। Sneezing, yawning, hiccuping, nakshujrimbana, hic adi. Have you really said hic adi? ये भी देखिए, ये भगवान के समक्ष भी अपराध माना जाता है, सेवा अपराध। कि उस समय हमको जवानी नहीं आए, जवानी उबासी नहीं आए, खिचड़ी नहीं आए, या फिर ढकार नहीं आए। इस समय प्रसाद में ये सब नहीं आए। Vikalikritam manasaha
or absent-mindedly. और कभी भी ऐसा ना हो कि मन में कुछ नहीं है, कोई भाव नहीं, बिल्कुल शून्य है, शून्यवाद, कुछ नहीं मन में बचा हुआ है। इस नाम के अर्थ पे Absent-mindedly means also absent-minded means also being worried. Oh, what will happen? Speculating. किसी शोक में है, चिंता में है, वो शोक कर रहा है, उसको कर रहा है, शोक कर रहा है, ऐसे। If one does so, his chanting will not bear any fruit. Therefore, one should be careful to avoid these faults. साधन बात को समझ बता रहे हैं और नाम के साथ बता रहे हैं। इस प्रकार के जप से कोई लाभ नहीं, वो केवल समय का श्रम ही है। Mantra siddhim avapnoti tasmad yatna paro bhavet. Mantra siddhim avapnoti. He will not achieve the perfection of chanting. कभी भी जप का उद्देश्य प्राप्त नहीं। All right, we'll continue. Kimcha, it is further said, one should avoid conversing with a woman, Shudra, if he is interested in chanting with great effect. One should avoid chanting at night. So I just want to say something about this before you translate. Why he's saying with women? Because women are having tendency to speak very sweet words and speaking about different variety of topics. And then this is not very conducive for concentration. Krishna is saying Bhagavad Gita that he is the speech of woman and the intelligence of woman. So the artistic speech. So that's not conducive for Japa. Therefore he is saying about woman and Shudra, because Shudra is, what means actually Shudra? Shudra comes from root Shuch. Shuch means to lament, to be in grief. And Krishna says to Arjuna, Ma Shuchaha, actually saying him, don't be Shudra. Ashochati na kangsha. No, in beginning when he calls him, Tutan, Ashochanan Vashochas. You're lamenting for what's not to be lamented. So Shudra, because he laments, then that kind of emotion goes to your heart. Therefore, it's not good to speak with Shudra while you're chanting, or just prior to chanting. Even for Mataji, you want to speak with the this for Prabhuji, like not to speak with the women. Verse. Probably both sides, both ways. तो प्रभुजी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि जब ये पहले जब के समय माता से बात है, यहाँ पर बताया गया कि स्त्रियों से बात करने में वो लोग बात करने में निपुण होती है और बहुत सारी बातें करती है, वो हमारे जब के अनुकूल होती है, तो हमारा मन जब के अनुकूल नहीं करता है और शुद्ध से बातें करती है, बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध का मतलब ऐसे लोग जो सदैव शोकित रहते हैं, जीवन में सब कुछ रहेगा कि फिर भी शोकित रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात करके जब नहीं करना है, उनको साथ बैठ जब उनको जब करके तो आप Stri Shudhrabhya Ratro Japa Parona Cha. One should avoid chanting at night. Early morning, it's still night, but it's auspicious. But night, to leave our rounds for night, it's clearly said. Ratro Japa Parona Cha. रात्रि का जप लिखने भूल गए, तो इसलिए से नहीं शुद्ध और रात्रि समय ये भी जप के भूल गई है, हो सके तो रात्रि होने के पहले जप कर लिया। Vyasa Smrito. In the Vyasa Smriti, it is stated, chanting while holding one's head in one's hands means being worried or something like falling asleep. तो एक सर पे हाथ रखकर कैसे जप किया? बहुत चिंतित है या तो नींद है? Crossing over the head bead is called Sumero. Head bead, no? Krishna or Sumero.
तो जब जब करते हैं तो जो सुमेरु है उसको पार नहीं करना है, फिर अंत में जाते हैं वापस वापस आते हैं, क्रॉस नहीं। Or failing to chant a fixed number of rounds is considered futile. जो नियम आपने निश्चित किए हैं, 16 माला तो 16 माला, 8 माला तो 8 माला, अगर आपने निश्चित किया है और आपने किसी साथ किया तो आपका जब निश्चित हो गया। तो जो निश्चित कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, अपने जब करेंगे जब के लिए for asking you questions about the class. Since this is the most important topic, vidhi Ekadashi, we chant extra rounds, or when we have certain occasions, we chant 64 or 32 rounds. So this particular rule applies to that as well, or? Means chanting in the night. occasionally, no. The number of rounds. As you mentioned, that you have to come to a certain number, and you cannot decrease, increase. So during But you're chanting more, no? yes. So yeah. So when we go above our regular rounds during Ekadashi or Yeah, but that's understood. No, more is yeah, it's welcome. Yeah. next day we go back to 16 rounds. Yeah, surely. Those who are about night shift, day shift, what about them? Yes. You answered. No help. You should pray to Lord that He gives you opportunity that you can do your job and service in good way. भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इस स्थिति में हमारे ऐसा कार्य है कि दिन में करना है, रात में टाइम करना है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ऐसा जॉब मिले, ऐसा कार्य करूं जहाँ पर अनुकूल हो सके करने के लिए, रात में जब नहीं करना पड़े। You see, even rishis couldn't predict these things in modern age. Like, even rishis couldn't predict, oh, they will do like this. They wouldn't believe what we are doing. I'm just joking. देखिए हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने सब कुछ भविष्यवाणी की, कलयुग के दोष होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं किया है कि रात में लोग क्या करेंगे, कभी सोचा कि रात में लोग काम करेंगे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था ऋषियों ने। हम लोग इस सोच के परे होकर काम करते हैं। Oh, just a moment. Vaishampayana Samhitaya, in the Vaishampayana Samhita it is stated, one should not engage in chanting while wearing only one piece of cloth or while wearing too much clothing. तो जब करते समय हमें एक वस्त्र हमारे शरीर पर नहीं हो और बहुत से वस्त्र नहीं देंगे, समझ रहे हैं? ज़्यादा समय है, बहुत से वस्त्र पहन के चलते हैं। One piece of cloth means like lungi or gamcha lower, we should have uttarya as well. खाली नीचे गमछा पहने या लुंगी पहने, ऊपर उतरिया नहीं है, वो भी ठीक है। कम से कम 2 वस्त्र होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा वस्त्र भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा Too much clothing creates heat, or if it's too opulent, then creates again disturbance of ego. बहुत ज़्यादा अगर शरीर खुला हुआ है, ये अहंकार को बढ़ाता है, बहुत ढका हुआ है तो हमारे ताप को बढ़ाता है, वो ठीक नहीं। Yeah, obviously. Prabhuji is asking during the, obviously you should wear, no? That's not too much. In winter, that's not too much. Too much, in winter you can also wear too much, no? If you're putting like 3-4 jackets, that's unnecessary. So we are saying that if you want to remove these things or you want to save yourself from the winter season, just one blanket, that's all. One thick blanket. One who performs Purascharana should wear a dhoti and a chadar.
The best is like our Vaishnava tradition, dhoti and angovastra. Na ikavasa, na ekavasa means not one piece. Japen mantram bahu vastra kulo nacha. Upari ado bahir vastre purasharana krit yajet. Upari means chadar and ado bahir vastre means dhoti. Translate? Oh, Before. okay. Ata eva mantrarnave, therefore in the mantrarnava it is stated, one should never chant japa while wearing a turban. Turban. तो शरीर को ऐसे सर को ऐसे बांध करके पकड़ के रखा है, पकड़ बांध के नहीं करना चाहिए. Listen this one. But here, observing so many devotees that Yeah, even I wear. But depends on situation of I wear if it's too cold or too sun. But then I will not chant if it's scorching sun. You go to shade and remove. No? While wearing a shirt or kurta, honestly, it's written like this. अब सब लोग सावधान हो जाइए. यहाँ पर लिखा हुआ है सिला हुआ कपड़ा, शर्ट या कुर्ता ये पहनने भी चलते हैं. खाली उत्तरी और धोती, लेकिन हमारे वैष्णव ब्रांड को बाबा बना के छोड़ेंगे. I didn't say this. Prabhu, they will scold me. Kurta and dhoti, that's all right. Yeah. What we feel actually, but our acharyas they will really make us like the Babaji. Srila Prabhupada established actually two standards of clothes. One is with kurta for general, also public appearance, and one is Brahminical without kurta. And doing puja, yagya, no kurta. At least at that time you follow Brahminical standard. And who doesn't have that experience and that realization, it's just his problem. It's not our problem. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. मुझे पिछली बार भी बताया था आप सबके last time also we mentioned this one. Yeah. Yes. कि हम लोग कम से कम अपने कार्य के आने के बाद घर में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे हमको बिल्कुल वैसे श्रृंगार करना चाहिए. धोती और चादर हमको बेस्ट. पूरे अपने रूम में रहते हैं सारे कार्य वैसे करें. सारी सेवाएं जब भगवान की सेवा क्यों करें अपने आप को पहचानने के लिए वैष्णव हूँ. जब इस मैंने हमको ये चादर हो तो अभी उठा Any significance for not wearing? What is significant? Oh, Prabhu, this is whole seminar on puja vidhi. I mean, I can just say it's stitching. It's just simple. If you have stitch, even when you wash, the dirt stays there, and then it's not suitable for. Like this, you open. If you have knot here or on dhoti or on sari, then you open the dot and you wash while it's open. You should never wash clothes if they are tight, because that stays there. The water also doesn't go inside. If it's not properly, it doesn't rinse. So it's simple to understand. क्यों नहीं सजावट वाले करना चाहिए क्योंकि जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ पर पानी का प्रवेश कम हो जाता है और वहाँ पर धूल रहता है. हमारे कपड़े बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए भगवान की सेवा के लिए, इसलिए बिना सिले हुए कपड़े पहनने चाहिए. इसमें अगर कपड़े में गांठ भी हो गांठ खोल के साफ करना चाहिए. अगर गांठ पड़ी हुई है पानी का प्रवेश कम होता है और वहाँ उसके अंदर गांठ के अंदर जो धूल है या जो गंदगी है साफ नहीं. इतना ध्यान दें कि कैसे बच्चों को कितना ध्यान रखें. सुचिता परम पुरुष भगवान की सेवा करने का क्या समय देखिए क्या विचार चल रहा है. वो छोटा सा जो बहुत तुच्छ जो धूल या कण हो सकते हैं वो भी नहीं आना, उसको भी निकालना है. इसलिए बिना सिले हुए कपड़े पहनने का कोई सिलाई नहीं. While naked,
we already अलग अवस्था में दिख रहे हैं we already concluded that. No, it's clear. With disheveled hair, disheveled, loosened hair. हाँ बाल खुले हों तो भी नहीं करना है Some of us, we don't have problems with this. With a dirty hand again, apavitra karo ashudaha. और पवित्र हाथ नहीं होना चाहिए While in unimpure state, और जब अशुद्धि की अवस्था में हो or while talking. तो जैसे जब आप किसी से बात कर रहे हैं तभी अशुद्धि के मतलब से आपने मन मूत्र सोच किया हुआ है इस प्रकार की अवस्था से तुरंत शुद्ध Ushni shikanchuki nagno mukta kesho galavritaha apavitra karo shuddhaha pralapana japet kvachit. Then next two verses, while chanting mantras, one should keep his hands covered. हाथ हमारे ढके होने चाहिए जब किसी से हमारे पास माला है His head uncovered. His head uncovered. हमारा सर जो है उसके ऊपर कोई चादर नहीं होती सर खुला And his mind free from worldly thoughts. हमारे मन भी बिल्कुल जितने भी ये सांसारिक विषय हैं उससे Anger and illusion. Free from worldly thoughts, anger and illusion. क्रोध और भ्रम मोह इससे दूर होना चाहिए Just one moment. ये बात बाकी Apravritakaro means uncovered hand. Bhutva shirasi pravrittopicha. Covered hand and uncovered head. Chinta vyakulo chito va. Free from worldly thoughts. Krodho branta kshudanvitaha. He should not feel hungry or hanker after food. तो जब के समय भूख की अभिलाषा नहीं हो और उस समय बहुत भूख लग रही हो ऐसा भी ना हो बहुत भूखे हैं या फिर भोजन के बारे में सोच रहे हैं दो चीज नहीं होनी चाहिए बस प्रसाद काम लेके बैठ सकते बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठ सकते So therefore, chanting before sunrise while fire is not so strong is better because body is not disturbed by sun and passion. तो बस ये प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हमारा नहीं होता है क्योंकि उस समय सूर्य प्रकट नहीं हुआ है तो आपको गर्मी या फिर भूख और शरीर बहुत विचलित नहीं होगा उस समय शरीर शांत रहता है One should also not chant while lying down. लेट के जब नहीं करना चाहिए Walking, standing, खड़े होकर के अगर कोई कष्ट नहीं है तो खड़े होकर जब नहीं करना चाहिए in a crematorium शमशान घाट में जब नहीं करना चाहिए or in a dark place. और बहुत अंधकार में जब नहीं करना चाहिए Anashana shayano va gacham uttita eva va ratyayam ashivistane inauspicious place like crematorium. Na japet timirantare, should not chant in those places and times. तो ऐसे स्थान पर जब नहीं करना विधान बताया गया So you see these instructions, they represent the ideal japa, chanting and meditating, because if you talk, walk, lay down, then definitely you are not in the mode of meditating. Yeah. But in these places like crematorium other houses you can do kirtan But this is not japa. yeah kirtan कर Yeah. Yeah, but it should be, no? kirtan वो कर सकते हैं लोग कहते हैं कैसे समझ लो नाम मतलब kirtan जब kirtan कर सकते kirtan नहीं कर सकते लेकिन जब करने के लिए ये स्थान ठीक है क्लियर नहीं बात
In crematorium. वसंतापुर का पूछा है कि हम लोग जब Some people have strange tendencies. I don't know. extra round so extra round can be chanted at Yeah, extra rounds you can maybe do while doing Japa walk. No, Srila Prabhupada used to do. But that will come also later in this text. One support. Sitting like this. Yes, sitting like this. Sitting like this, right? Like Walls. sitting down. हाँ समझ गया मैं समझ गया मेरा बैक की बोल रहा है with support like this. It's better not. आदर्श But Prabhu, you're not chanting. You're not chanting now. So. क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि आदर्श की बात है आदर्श मतलब आइडिया है कि नहीं लिया जाए अगर कोई बहुत कष्ट नहीं हो शरीर में इसको बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे हैं लेकिन इसको अगर ठीक से बैठ सकते हैं तो नहीं ले पाते I also observe his mind is more alert when there is no support. Yes. Yeah. But whenever Swami is given provision, that side the support will be there on this. But am I leaning on it? From first day, this Prabhuji is testing me. How is Nityananda? He's very lucid now. He's thinking. But if you see, most of times I'm not leaning on us. No, am I right? Yeah. There is a gap. We are seeing from this side, you are not touching. Yeah. Evidence, the witnesses are there. But I'm not doing japa anyway. All right. And now are coming a few challenging ones. One should not chant mantras with his shoes on. I mean, it's not walking also. And if you're not walking, you're not having shoes. You're not sit with shoes, probably. तो जूते पहनना भी जरूरी है जूते पहनने जरूरी है ये सब आदर्श की बात चल रही है आदर्श की बात You see, yesterday we did that exercise, and if you try to practice that exercise, it will be so beneficial. All this will be covered. Times, places, everything. You'll finish 16 rounds. You can finish 16 rounds in 1 hour, 5 minutes, 10 minutes. If you do really properly, 5 minutes round. Prabhupada never gave actually the time to finish the round. And with mantras, it's same like with these mridanga mantras. You start slow and loud, and you can't go faster and softer if you didn't master the previous level. But if you master, then it'll be softer and not so loud, and you can come to 5 minutes. It's possible. If you follow all this, you'll come to 5 minutes easily. As soon as you stop walking, you will lose 2 minutes in round. I have tested these things. 2 minutes in rounds, down. Just by sitting down. करने की जो विधि बताया जा रहा है उसमें तो पालन करेंगे बड़े आसानी के साथ में अच्छा जगह लगाएंगे और कम समय में 5 मिनट में आप बैकग्राउंड हो जाएगा आपके पालन करेंगे ठीक आप चलते हुए जब करना चाहेंगे वॉक करते हुए जब करेंगे तो आपका निश्चित रूप से समय भी ज्यादा जाएगा पूरा ध्यान रहेगा इसलिए जो नियम बनाया है कि हमको जब किसी विधि से करना चाहिए या आचार को बता रहे हैं उसे ध्यान रखना चाहिए
While traveling in a vehicle. Challenging, I thought. देखिए आजकल हम लोग सब लोग इसका सहारा लेते हैं। एक तो है कि जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, दूसरा इवन द पैसेंजर। He said traveling, not driving. ट्रैवलिंग जो भी यात्रा कर रहे हैं व्हीकल में, इसका अर्थ क्या है कि जब एक अपने आप में एक बिल्कुल एक्सक्लूसिव एक कार्य होना चाहिए। मैं अपना कहीं जा रहा हूँ उसमें उपयोग कर लिया ऐसे, इसलिए अलग से समय देना पड़ेगा। That's priority. While lying on a bed, यहाँ पर सोते हैं वहाँ पर लेटे हुए और चल रहे हैं। because then we'll naturally go to sleep. निश्चित रूप से अगर बिस्तर यहाँ पर सोते हैं वहाँ पर जब करेंगे तो सुनिए है। While spreading legs, पैर को फैलाकर के जब करना चाहिए। or while sitting in an unconventional position, means something which is not recommended asana. और ऐसे अवस्था में बैठना जो आसन हमको नहीं बताया गया है, प्रमाणिक नहीं है, उस मुद्रा में बैठ के करना है। So, Sanskrit saying, Uphanam Gudapado means with shoes on. Va yana shaya gatastata, while traveling in a vehicle. Prasarya, while lying on bed. Yana shaya. Oh, yana, okay, yana is travel. Shaya. Yana shaya gatastata, prasarya na japet padav utkatasana evava. Utkatasana means unconventional position, because if you sit improperly in any way, then your pranas will go to some direction. And Srila Prabhupada gave about this one very simple instruction. You know, everyone knows that. When we hear that Japa tape, Sit properly. sit properly. And just again, you know, in one word or two words in one statement, he summarized all this. Sit properly. बहुत आवश्यक है कि हम लोग सही मुद्रा में बैठे, नहीं तो हमारी प्राण वायु जो है वो अलग दिशा में जाती है। तो प्राण वायु के द्वारा हम जो मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जब सही मुद्रा में बैठेंगे तभी वो कार्य पाएंगे। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कई बार बोल रहे हैं, एक प्रवचन से बोल रहे हैं कि फिक्स रहे, जब किसी बोले फिक्स रहे, समाज तक वो यही बात कह रहे हैं, फिक्स रहे, एक मुद्रा में बैठे। And what happens if you sit properly? First of all, your meru, the backbone, is aligned properly and doesn't break the nerves. And if you sit in any way, other way, it will squeeze nerves in some way, and then you will have tendency to use that part of body. And sitting with crossed legs, also it's inward, and we don't have tendency to use these legs. You cover your hand, and you're more introspective, you internalize your consciousness, and then manomadhye mantro stitaha. जब हम सीधे होकर बैठते हैं तो हमारी जो मेल बिल्कुल एक लाइन होती है, हमारे शरीर में कोई कष्ट नहीं होता। तब हम अपने प्राण वायु मान जो देखा मन को मंत्र में ये सब को एक साथ में हम लोग कर पाते हैं। इसलिए बैठना शरीर को बैठना बहुत आवश्यक है। You see, there is many doshas explained and few gunas, because obviously there is tendency to make these faults. Therefore, Acharya have written them to remind us. देख सकते हैं कि कौन कुछ गुण हमने सुने पहले और दोष ज्यादा सुन रहे हैं लोग कि कैसा दोष होता है, जब करते वक्त क्या क्या अपराध होते हैं, क्या क्या दोष हैं, उसके बारे में बहुत विस्तार में बताया। Yajnavalkya Samhitayam, in the Yajnavalkya Samhita, it is stated, one should not chant japa while traveling. We already had this. तो यज्ञवल्क्य संहिता में बताया गया कि हमने सुना पहले भी, यात्रा करते वक्त जप नहीं करना चाहिए। While laughing, हंस रहे हैं बहुत देर से जप करते हैं नहीं करना चाहिए। while looking this way and that, और कहीं इधर उधर देखते हुए जप नहीं करना चाहिए।
in an open space. In an open space. हाँ, एकदम खुले स्थान पर जप नहीं करना चाहिए। While speaking, बात करते वक्त जप नहीं पहले सुना जप नहीं करना चाहिए। with a covered head, अभी पहले सुना हमने पूरा ढका के सर ढका के जप नहीं करना चाहिए। while shaking one's legs, one's leg. पैरों को हिलाते हुए जप नहीं करना चाहिए। Or there are sometimes devotees really shaking hands, legs, head, everything like that. कई बार वो ऐसे करते हैं, इससे पूरा होता है। While scratching one's hand, while scratching one's hand और खुजली करते हुए ऐसे जप नहीं करना चाहिए। means that he didn't take bath. इससे मतलब उसने स्नान नहीं किया, ऐसे खुजली कर रहा है। You see how it's important to follow process. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको पालन करना। If you take bath with mud, you'll feel very smooth. None of this will come bacteria, especially in Ganga mud. None of these bacteria will come, and it's really nice for skin. Where? In Ganga mud. और गंगा में स्नान करें आप लोग तो कभी आपको खुजली नहीं होगी। Or we have this angrak, no? Angrak or angarak, this soap made of cow dung. Angarak, yeah. जैसे गाय के कुछ पंचगत साबुन बना होता है, वो लगा सकते हैं वो। With an uncontrolled mind, अनियंत्रित मन, मन अनियंत्रित हो, वो भी जप के अनुकूल नहीं। or with a doubtful heart, हृदय में संशय है, तो कर रहे हैं सही नहीं, वो श्रद्धा नहीं है। in Sanskrit, na chakraman, na chahasan, na parshvamalokaya, not looking here and there, na pashito, na jalpams, prajalpa, you know, chana pravrita shirastata means with uncovered head, with covered head. Because while covered head, we have Brahmarandra here, and so much of prana is there to Sahasra chakra. It's very, very important that the whole energy is going upward. तो इसको कोई ढकना है, सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, और सभी चक्रों से सातों चक्र से जो वाले प्राण वाले है, पूरी शक्तियों का संचार करते हैं, और उसको ऊपर लेके जाते हैं। ढकेंगे तो फिर वापस नीचे आता है, ऐसे नहीं करना है। Na pada padam akramya means shaking one's leg. While scratching one's hand, na chaiva hitata karo, na chasama hittamana means with non-equiposed mind, sama hittamana, na cha samshayano jape, samshaya he has doubt. Samshayatma is mentioned in Bhagavad Gita. He doesn't achieve anything because if you have doubt, you can't focus. You're reluctant to do some activity. संशय आत्मा जो है कोई नाम बताएगा है नौवेद है इस श्लोक में जो शब्द है संशय आत्मा वृक्ष का विनाश होता है। And now one very interesting is coming. While meditating on mantra, one should not move his lips or tongue. अब और से बहुत रोज याद है कि जब करते वक्त हमारी जिह्वा और होंठ नहीं मिलने चाहिए। चुपचाप 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 जब सुना है। But right, it's written here. This is from Yagyavallika Samhita is saying Manasa Mantram. Manasa Mantram is Vachaka. That's Gayatri. ये मानसिक जप है जो हम लोग से रूप से भगवान से करते हैं ताकि उनका उच्चारण करा सके। Shake his head or neck, nor expose his teeth. दांत नहीं निकलने चाहिए उनके,
करने के लिए चाहिए तो शांत हो जाए। But if you really come to kind of peace of body, you will see the naturally body inside shaking like a cobra, we said, a little moving here and there. But it's not like shaking with, with head or shoulders or neck. It's very lightly. तो जब बिल्कुल आप ध्यान में जब कर रहे हैं तो हल्का सा आपका शरीर हिल सकता है, जैसे वो सांप जो है अपना फन जा रहा है वैसे, तो ठीक है। लेकिन बहुत तेज से हिलता है वो ठीक है, वो मतलब प्रयोग के साथ। So dhyayeta manasa mantram, jihva ushtav, lips or tongue, na tu chalayat. Chalati means to move, should not move. Na kampayat shiro, should not move head, grivam, neck, dantan naiva prakashayat, should not show his teeth. Oh yeah. Oh, how you? Because first we're translating, then you are reading them. Oh, right, okay. Right. Because yakshas, demons, ghosts, siddhas, and vidyadharas forcibly take away the fruit of one's japa, one should secretly chant. Yaksh और गण and Yaksha, demon, ghost, siddha, and vidyadhara. ये सभी लोग विचरण करते हैं, इसलिए बिल्कुल शांत होकर जब करना है। हाँ, बहुत गुप्त रूप से करना है, शांत गुप्त रूप से। Especially, in Kali Yuga, this Hare Krishna Maha Mantra gives so much benefit and gives side benefits as well. Everything, all kinds of yagyas, all kinds of pujas, japas, that are fulfilled just by this one mantra. So these personalities, both pious and impious, they get these credits and therefore they can sustain themselves in those positions. इतना घूम के हम जब करते हैं, सबको लाभ मिलता है, जो शुभ अशुभ सभी को जीवन है, सबको लाभ। Yaksha, Rakshasa, Bhutani, Siddha, Vidyadhara, Ganaha, all these groups, Ganaha, Haranti, Rasabam, they are stealing. Haranti, Rasabam, Yasma, Tasma, therefore, Guptam Samachara, we should perform secretly. इसलिए हमको बहुत गुप्त रूप से अभिनंदन श्रावण का बहुत गुप्त रूप से करना चाहिए। Okay. Trilokya Samohana Tantrecha, in the Trilokya Samohana Tantra it is stated, Alana devotee should never step over the shadow of a karanja or banyan tree. तो बताया गया शास्त्र में कि किसी भक्त को जो है वो जो बरगद का पेड़ है उसकी छाया को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। Nor should he give anything. Nor should he give anything to anyone or accept anything from anyone while chanting his mantra. No dadati pratikritnati during. जब करते समय हम न किसी को कुछ दें और न किसी से कुछ लें। अर्थात कोई जब कर रहे हैं तो उनको आप कुछ मत दें। All these are just confusing activities during japa. Na chayam akramed vidvan vipitaka karanjayoho na dadyat kasyachit kinchina grihniyach japantare. And we are coming to next adhikarana, ata dosha prayashchitani. Prescribe atonement for faults in this regard. And before we continue, maybe there is some question. हम जानेंगे दोष के प्रायश्चित। यदि दोष हो रहे हैं जब ऐसा है, तो कैसे इसका प्रायश्चित है? दोष निश्चित रूप से हो रहा है। दोषों से बचना लगभग असंभव दिखा रहा है एक तरह से।
तो उसका प्रायश्चित चल जाएगा। हाँ? तो उसके पहले कोई प्रश्न किसी का अभी तक के विषय में? बहुत से प्रश्न। जैसे यहाँ शुरू कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं। Yes. Night chanting on the early morning, like we are getting up 2 o'clock and then okay. Yeah, we said that. We said. So that is normal, but still early morning. Before Brahma. Yeah. Different living beings, they wake up in different times. And devas, in those times, some of the Rakshasas, astros, they can be still active. And if maybe not in Kuwait, but in Western countries, you see people are drunk in those times because they are possessed. But later, the devas, I think first rishis, then devas, the munis, then humans are waking up slowly. And then asuras. तो प्रभु कुछ पूछना कि क्या ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो भी तो रात्रि नहीं आएगा, उसमें जब कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अलग अलग जीव अलग अलग समय पर होते हैं, उनके उठने का समय अलग होता है, और कभी कभी उस समय रात्रि में असुर लोग बड़े सक्रिय होते हैं, तो अलग अलग समय दिया गया है। ब्रह्म मुहूर्त से मनुष्य और जो ऐसे आध्यात्मिक जिज्ञासु होते हैं उनका समय की शुरुआत होता है, वो समय जी हरे कृष्ण। तो ये जितना भी जो नियम बताए गए हैं जब मात्रा के लिए, अभी हम लोग जिस अवस्था में हैं इसमें से बहुत मुश्किल से कोई ऐसा होगा जो हम लोग होता होगा, तो सब अच्छी है तो हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। खड़ा होकर जब करना, चलते हुए जब करना, रात को जब करना, ड्यूटी करते समय जब करना, यात्रा करते समय जब करना, या कभी जूता चप्पल पहने हो पहन जब करना, पूरा कपड़ा पहने हो पहन ठंडी के मौसम में, तो सब कुछ भी ऐसा ही है चल रहा है। तो क्या इससे ये सब निष्फल है, क्या अपराध है, इसका अर्थ है क्या? नहीं, ऐसे हम लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा जी, तो ये समझ में आया। So actually that whatever you have mentioned, most of us, almost 100%, especially in such places where we work like this, it's so difficult to follow what we're doing now. So it says given what we should do, that what we are doing right now, sometimes standing and listening, we do all this stuff. This is also completed somehow. So all will be useful. What? So what we do is very much. But when he's saying Nishpala, means that there is no this ultimate benefit. I mean, obviously we progress somehow till today, but that should not be excuse not to apply as much as possible. We should not think either everything or nothing. As much as possible we follow. And then the Lord sees that attitude. Sometimes we said, oh, the Lord is Bhavagrahi Janardana. He just sees your attitude. But what kind of attitude if it's you're not trying to improve yourself? So he's seeing that Bhavagrahi Janardana. So if you don't try to improve, then the attitude is not good. Okay, if you can't follow and you try, it's glorious. But if you just justify yourself as an excuse, then it's not glorious. Then you can't get mercy. And there is no, as Lord Chaitanya is saying, there's no hard rules and regulations. And these are not actually hard rules and regulations. I told you in the beginning, Hari Bhakti Lasa, yesterday was speaking, there is so many samskaras, mantra samskaras to Shodhana, Chodhana, so many of these to purify the mantra and then we don't do these things. These are not hard rules and regulations. These are wake up, chant, follow a little of internal, external cleanliness, finish and continue with your day. It's not actually that hard. If you give yourself time in life to develop this, 1, 2, 3, even 5 years, is that beneficial? प्रभु कहते हैं कि जैसे बताया कि निष्फला का मतलब ये नहीं कोई फल प्राप्त हुआ। यहाँ पर निष्फला का मतलब है जो इच्छित फल क्या है, कृष्ण प्रेम। और वो शुद्ध वस्तु प्राप्त करने में शुद्धता की आवश्यकता है।
हम आपको कहते हैं कोई नियम नहीं, कोई लाभ नहीं, इसको सामने रखो। और अगर हम नहीं कर पा रहे लेकिन हम प्रयास करना चाहिए, उस वक्त बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हम खाली ये बोल करके देखिए, हम बोलते हैं भगवान को भाव है, किसी भी करो भगवान भाव है, ये बोल करके हमको उस वक्त प्रयास करना छोड़ नहीं देना चाहिए। हमारी स्थिति ठीक है, इसलिए मैं हमको नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रयास करने का हमारे में अवसर ढूंढ रहे हैं, उससे भगवान से और कुछ समय नहीं होते, ठीक है अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ चीजों में अभी इसको पालन करना शुरू करें। जैसे मैंने बताया कि आंतरिक बाह्य सूची सब कर सकते, बाह्य सूची आंतरिक सूची और मन को वहां पर मन में स्थित करने की जो योजना है बनाना, ऐसा उसको ढूंढना, ये का प्रयास सब कर सकते, करना चाहिए। ये इतने कठिन नियम भी नहीं है, देखा जाए हम प्रयास करना शुरू करेंगे तो भगवान की बात चाहता करेंगे, तब हम आगे तो प्रयास करना चाहिए। Just to say one more thing, आप हो गए ये क्वेश्चन जी 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 आपका शरीर सब काम कर रहा है, लेकिन आपका मन इसमें लगा हुआ। just to mention one thing regarding Prabhuji's question, the Namaparada is giving bhukti, Namabhas is giving mukti, and Shuddhanam is giving bhakti. And therefore, when they say Nishpala, means it's not giving you that pure devotion, Shuddha bhakti. तो अपराध नाम जो है हमको भुक्ति देगा, भोग। अपराध शून्य जो नाम है, जिसका अपराध शून्य हो चुका है, वो हमको मुक्ति देंगे। और जो शुद्ध नाम है वही हमको भगवान की कृष्ण प्रेमा होते हैं। तो जब यहाँ पर बात की जा रही है, ये कृष्ण प्रेमा भक्ति की बात है, वो निष्फल है, वो अधिकार। इस प्रकार की तरफ से जो हम कर रहे हैं वो प्राप्त होगा, लेकिन मुक्ति तो मिल रहा है, अपराध शुद्ध हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। बाकी लाभ लेंगे, आपको बहुत लाभ लेंगे, लेकिन शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए हमें दिखाना पड़ेगा भगवान को कि सच में मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, आप बता रहे प्रयास है, अपना पूरा प्रयास है, अपने स्थिति में पूरा प्रयास है, ये हमें करना प्रयास है। आपको कुछ You mentioned that one should chant secretly. Does that apply to the Hare Krishna Mahamantra as well, or Mahamantra is also good to chant secret. Therefore, Upamsha, you chant for yourself also, no? प्रश्न है कि आपने कहा कि हमको जब जो है सिक्रेटली करना चाहिए अपना जब, कितना तेज करना है कि जब कोई, तो क्या ये गायत्री मंत्र के लिए है कि हरे कृष्ण महामंत्र? कोई बात हरे कृष्ण महामंत्र भी हमें उपांश हर हमारी बस खुद सुन पाए इतना ही करना चाहिए, वही जब। यस नो Hare Krishna Prabhuji, like you said, we should chant in a pure state and pure place. And as we are hearing feelings square, so unfortunately, in every building, apartment, or and people are eating non-vegetarian food, even our roommates are eating. So how can we get the pure state in those conditions? Especially, we have restaurants in our society apartments, and then I don't want to take the word out. So you understand. So this is the land where this is happening, and where we can find out your place. If something is disturbing your spiritual life so much that you can't practice, then leave that place. Run like from a hell. कोई प्रश्न कि आपने कहा कि शिव स्थान पर जब नहीं करना चाहिए, और यहाँ तो जहाँ पर रहते हैं हर बिल्डिंग में हर जगह पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा मांस खा रहे हैं, बिल्कुल प्रतिकूल है हमारे लिए। लोगों की हत्या हो रही है आसपास में, तो कैसे इससे बचा जाए? कभी कहा कि अगर आपकी स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं आप, और लगता है कि सब कुछ प्रतिकूल है, तो स्थान छोड़ दिया। हमको निर्णय लेना पड़ेगा हमारे जीवन में क्या बात होता है। If we are sincere, we'll pray to the Lord that He makes arrangement for us where we can practice properly, and then it will happen definitely. हम गंभीर हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान कैसे से बचूं। तो भगवान की ऐसी योजना बनाएंगे या तो स्थान छूट जाएगा या तो स्थान शुद्ध हो जाएगा। भगवान ने बताया
But I don't advise anyone to do any hazard or any risky activities and suddenly be on street or something like that. So it should be planned and contemplated how to, prepare our environment for spiritual life. कभी कह रहे हैं कि हमें इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से निर्णय ले लें हम। कभी हमने सुना या सुबह आसमान में छोड़ो, जॉब छोड़ो, और उसके बाद आप गली में आ जाए या फिर आप रोड पे आ जाए, ऐसा नहीं करना। और आपको योजना बनानी पड़ेगी। हम सुन करके योजना बनाए कि मैं अपनी विधि किस तरह पाऊँ, ऐसा हमें प्रयास है। या तो उसी स्थान को शुद्ध बनाने का प्रयास है, या तो फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान योजना बनाएंगे। Like there are rules for japa. However, we can do kirtan anytime, anywhere. Is it true? Kirtan anytime, any place, no rule at all. Kirtan. Yeah. No rule. No, anytime, anywhere. Yeah. Thank you. कीर्तन के लिए कोई नियम नहीं, कहीं पर भी कर सकते, खाते पीते सोते। Prabhuji, when you have done the japa practice, Now I'm in trouble. when you have done the japa practice, so how do you do takes time? So takes time. Takes time. Next time, Yeah, but I have seen some Prabhuji took double of that time. 2x, Sorry, also. 2x. So this I think somebody was behind me to finish that one. So which one is which practice is better actually? This very slowly or I did mistake again? You understand the question? No. He said that you mentioned that time about the japa. So when you're chanting, suppose I took some time, and then I saw some people are still taking longer time. Yeah. Some people are chanting very fast. Yeah. So what is the ideal time? Which one is better? There is no ideal time. It's individual. If you focus, the point is of focus. If you can focus on slow, that's good for you. But try then to go faster. If you can focus on, little more faster, then you progress in speed. And then little more and then you become fast and focused. Not just fast. The point is not to finish rounds. The point is of meditation and devotion in chanting. इन्होंने कहा कि इस समय निश्चित नहीं समय की होना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम ध्यान कर पा रहे हैं। कोई लोग धीमे धीमे ध्यान कर पाते हैं, कोई लोग थोड़ा तेज ध्यान कर पाते हैं, दोनों ही ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समय महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हम हर नाम पे ध्यान कर पा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। वो आपके क्षमता के अनुसार, अगर आपको धीमे में होता है तो धीमे करिएगा, पूरा ध्यान होना चाहिए हर नाम पर, अथवा तेज करके ध्यान कर पा रहे हैं। another doubt is Lord Krishna born night 12 o'clock. So how we can say the night japa is not good, because I am waiting for his birth actually. We'll take break now. What? Prabhuji का प्रश्न है, you said कि night we should not chant. Lord Krishna appeared 12 o'clock in the night. So how you will say? We are waiting for that time. When 12 o'clock will come, Lord will appear, I'll chant. You are saying night, don't chant. Prabhu is looking for philosophical problems. That's philosophical mind. It's good. No, but it's actually good. These questions are actually good, what he's asking. He is observing reality now. But we do kirtan at that time, not japa. उसमें हम लोग मंदिर देखे सब कीर्तन करते हैं, कीर्तन के कोई समय नहीं है, और कीर्तन जो नाम जो धर्म दिया है संकीर्तन सबके साथ लोग कीर्तन करते हैं, वो कैसे कीर्तन करते हैं बार बार भगवान को प्रकट कराते हैं आप Prabhu, there is so much more of text. There is so much more of text. It's 12:50. What should we do? तो भी और भी हमें श्रवण करना है, हम लोग सुन रहे हैं और हमें एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न। Okay, I recommend one short break. I would also need to go wash shortly. Yeah? एक हम लोग 5 मिनट का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ब्रेक। Okay. And then afterwards बात करते हैं, फिर मुझे जाके आएंगे वाशरूम से। माइक
3 questions. But they said 1, no? After break, we'll answer all. So, Yes. Vajrasana is acceptable for sitting, Yes. Vajrasana. I will answer everything yes or no. Please tell. and sometimes when we do chanting, we leave the mala halfway through and come back and start from the same No. place. Not acceptable. And the third one, bath, is it, we don't take head bath, is it acceptable specifically for Mataji's? But then we understand this, yes. Okay. Hare. Hare Krishna. Japa is there. Chapal. Thank you. So we try to understand the request everyone to take your seat, please. Next question. Darshan. आप लोग कुछ हो गए हाँ फिर हो गया सो
बोलिए। हाँ कुछ सर प्रभुपाद जी ने हमको जप करने का जो उनका जो विधि है कैसा ये लिखा है, मतलब जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं उनका एक ये दिया है, रिकॉर्डिंग्स है, तो वो कैसे जप करते हैं। तो क्या हम उनको प्रभुजी ने बताया अभी कि वी शुड चैंट साइलेंटली, बट श्रील प्रभुपाद को चैंटिंग थोड़ा सा ही कर रहे हैं ना, तो जैसे वो आउट आ रहा है, तो क्या हम वैसे चैंटिंग उनको कैसे फॉलो कर सकते हैं। Is he cousin of this Prabhuji? सेंटी लोग कैसे नहीं हो they're very good friends. Yeah. Which sampradaya? सब का दोष बड़ा बोलिए हाँ सर oh yeah That's so you asking that you mentioned when we hear Shri Prabhupada chanting loudly we can hear we also hear his state we can see that he chanting audible voice sound is audible actually so we should follow Shri Prabhupada we should just do like not together but the way he has taught the way he's chanting is loud you should follow his, means with him, his rhythm. not with him. But that way where we can pronounce a little louder. How do you know that he was chanting loud? It's not a tape, it's a tape. When we hear the Prabhupada tape, he's chanting Hare But Krishna. still, you're his engineer, he should think about this thing. But you can, these recordings, you can increase volume or decrease. I'm not telling about the volume. Then- I'm telling about in the way we have to chant what Srila Prabhupada just shown his example by just his 108 mantra is there, na? Yeah, but look, this most of these recordings, they are dissected and there was cuttings and makeup, acoustic makeup. So you can't say that this is original. So we should chant like that. Exactly. Understand? Thank you. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna. But it's good. But but it's good in beginning to chant louder and slower, and later faster and softer, because mind absorbs more in louder things in beginning. Not too much louder, but Yeah, yeah. हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी हम लोग माला जप करता है तो जप करने टाइम बहुत याद में आ जाता है तो कैसे उसकी से दूर रह सकते और आप लोग रास्ता में अकेला चलता है तो आप लोग जप करेगा तो आवाज दूसरा आदमी को सुनेगा उसको भी तो पुकार हो सकता है इसके लिए वो क्या अपराध है While chanting, so many thoughts coming in the mind, how to save ourselves from that. The second, when we're traveling and chanting, sometimes people who are nearby, they hear Hare Krishna Mantra. So it's going to benefit them. So it's offense or it's beneficial. Mm-hmm. What was the first one? Okay. First one is thought in the mind. We have already answered this. If you can't focus on the artha, the meaning of the mantra, then at least think about Krishna and things related to Krishna. Rupa, Guna, Lila, Dham, Jan. like that. But हम लोग को मन को एक विषय देना पड़ेगा सोचने में थोड़ा बच्चा होता है तो मगर गाँव लोग देखेंगे हाँ वो देखने जा रहे हैं तो बाउंड्री कर रखें चलो बाउंड्री के अंदर क्या वैसे मन को बोलना पड़ेगा ठीक है कुछ सोचना ही है भगवान के नाम रूप गुण ये आपकी बाउंड्री है इसी में सोचो इसी में जितना सोचो मजा आता है But if you follow this process, you will not be needed to do that. तो ऐसे आप देखा आपको बताइए विधि अगर आप ये करेंगे भगवान के नाम की अर्थ पर ध्यान देना और नाम को मंत्र में और मंत्र को मान करके करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं अपने आप में And the second question, which and Japa and others are benefited, and that's fine, but we should not be fanatics in bus or any public place. I remember once in Singapore, we entered the elevator, and it's the person who was also in elevator with us was not devotee, and he was in really kind of official mood.
And devotee who was with us, very young and fanatic, he was constantly just very loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. They are like that. Srila Prabhupada sometimes would just greet with good morning, have a nice day. Because you don't be fanatic. What will you be thinking? Oh, I will benefit the whole world, I will save the whole world. But sometimes we need to just leave the good impression. तो निश्चित रूप से हम सबको मना करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत जज्बाती हो जाए, बहुत भावुक हो जाए। कई बार जो है प्रभुपाद जी देखो काली बोलते थे कि शुभ प्रातः काल आपको शुभ हो, प्रश्न बोला करते थे हमेशा प्रभुपाद जी समय से उठा देते थे, एक अच्छा छाप छोड़े उनके ऊपर। और जब सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमारे स्वयं कीर्तन करने से पहले जब हमारे स्वयं Without relationship, we cannot preach or teach to anyone. So unless they develop trust in us, it's very difficult to preach. Better to be attractive than to be attracted by them and to try to, convert them. So better you be attractive and be very decent in your appearance, then people naturally ask you, oh, your character, your activities, your lifestyle is so amazing. What you're doing? What is this? It's better preaching. तो हम प्रस्तुतिकरण में बहुत सुंदर रूप से काम प्रस्तुत करें, हमारा भाव अच्छा हो, वो प्रभाव डालेगा दूसरों पर ज्यादा, बजाय कि वो हमसे सुन करके प्रभाव नहीं करेगा। हमारा संबंध नहीं बने उससे, उनको हमारे पर विश्वास करें, ये व्यक्ति जो हमको बताएंगे सिखाएंगे, तब तक ये संबंध नहीं बनता है, तब तक ये विचार करता है। Okay, last question, then we'll continue because time is. Last question. हरे कृष्णा। प्रभु जी ने तो बताया था थोड़ा पहले, हमने से सुना था कोई महाराज से, तो पंचोदीक्ष होता है, अश्वत्थ, वट, कमल, कदम्ब और अम्ल। इसको परिचय और कभी पाप पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो रास्ता में हो जाता है, हम चलना चाहिए दिशा में, तो हम तो धर्म संकट आ जाता है। तो किसी परिस्थिति क्या करना चाहिए? ये धर्म संकट में थोड़ा विस्तार करेंगे तो सब लोग के लिए अच्छा है। जो हम लोग अपराध हो रहा है, कदम कदम पर 8-19 अपराध कर रहे हैं, तो जाता है कैसे बांचने का उपाय? अभी तो मुझे बताने जा रहे हैं, जो दोष का प्रायश्चित है वही बताने जा रहे हैं। वो किसे होगा? जितना भी दोष लगाया गया, उस दोष का प्रायश्चित शुरू हो जा रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhu. तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दोष का प्रायश्चित। हरे कृष्ण। Is there any other process for children? You introduce slowly, gradually, whatever they can do. You focus on quality of one round, of one mantra. If you explain them the essential part, Manomadhye mantra stito, if you explain them that essential part of meditation, they will love it. But if you impose on them many rules and regulations, they will not be able to follow that. They will not understand it first. But if they understand the essence, then all the rules and regulations are helping to get to that essence, they will love it. But if there is no essence, it will be just the right thing. It should make them to serve and love Krishna, and if they can do that, if you do that, they will be able to do that. If you're not doing, they will not do, because they see that. If you are doing, they will do that. So that's the teaching. If we love chanting, they will also love. They will see in that some purpose and meaning in life. Otherwise, rules and regulations will not be just enough for that chanting. प्रश्न कि बच्चों के लिए कोई अलग से विधि या कैसे बच्चों को चाहते हैं? कोई बहुत छोटा दिया, बच्चे लोग आपको देखते हैं हमारा, और माता पिता के अंदर जब भी प्रेम हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को भी आ रहे हैं, तो देखते हैं प्रेम कैसे जब कर रहे हैं, माता जैसे जब कर रहे हैं, ऐसा उनका जब करने का भाव, और उनको भी धीरे धीरे बनाया जब के भाव,
और उनको भी हम साथ बताएं कैसे मन को मंत्र में स्थित करना है और मंत्र को मन में स्थित करना है और सारे नियम बेटा वो ही लेके आने वाले हैं, इसी को आना चाहिए। तो उनको भी उत्साह है, वो भी पालन करेंगे। एक साथ बहुत समय बता रहे हैं तो पालन नहीं करना, तो उनको साथ में बताएंगे इसलिए हम ये करना चाहते हैं ऐसे, तो फिर उत्साह आएगा। और विशेष रूप से हम कैसे जब करती बहुत गंभीर है, बड़ी गंभीर है। All right. How much time we have? It's 1 o'clock. Done 7. 1 बज रहा है। कितना समय तक आप लोग बिना प्रसाद के बैठ सकते हैं? 3 मिनट। ब्रह्म मुहूर्त भी बैठ सकते, 3 मिनट बैठ सकते हैं। Which time? तो हम लोग 1:30 बजे तक, 1:30 तक 1:30, ओके 1:30 2:30। एक्चुअली शाम का प्रोग्राम 6 बजे से है, तो कभी 6 बजे करना पड़ेगा, उससे प्रोग्राम सारा काम करना पड़ेगा। तो इफ यू आर ओके वी कैन गो अप टू 1:30 1:45। Yeah. 1:30 क्वेश्चन आंसर। Yeah. Atadosha prayashitani prescribe atonement for faults in this regard. Tatraiva, in the same literature, it is stated. To chant japa, one should sit down silently. Down. Down. तो आप दोष की प्रायश्चित बताया जा रहा है। One should perform achamana if he happens to see a dog eater or other such fallen person. जैसे भी बात चल रही थी कि अशुभ स्थान है, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आचमन करें, ये प्रायश्चित है। आचमन करके अपने आप को शुद्ध करें और जब करते समय दृष्टि हमारे नीचे हो, कभी दृष्टि ऊपर नहीं, दृष्टि नीचे बात, नीचे का मतलब बहुत गर्म है और दृष्टि नीचे करके हम देखते हैं अच्छा। ये देख लिया आपने, अगर किसी को देख लिया आपने ऐसे पतित लोग को, यहाँ सब लोग पतित हैं, तो आचमन करके जब करना चाहिए। If one must speak with such a degraded person, he should bat before continuing his chanting. और हम सब के लागू होता है। हम लोग ऑफिस में ऐसे लोगों के साथ ही काम करते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ में आपने बात कर लिया, जो कुत्ते का मांस खाते हैं या फिर ऐसे मांस खाने वाले ऐसे लोग, तुरंत आने के पश्चात स्नान करना चाहिए। ये प्रायश्चित है। सुन रहे हैं ना? तुरंत प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुरंत आके स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद ही माला खाना। If one happens to see stool or urine, then he should bat before chanting japa with a controlled mind. और कहीं रास्ते में आ रहे हैं और कोई आपको मलमूत्र दिख गया, चाहे पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, तो तुरंत आने के बाद स्नान करें और स्नान करके जप करें। These instructions are so direct and simple, so there is no need to explain anything. And साफ निर्देशन प्रायश्चित है कि दिख गया, हो गया, शुभ हो गया, क्या करें? Tushnim asita samjalpa chandala patit adikan drishtva tanvarya upasprishyabyas snatva punarjape achamya payato nityam japet ashuchi darshana. Kimcha, it is further said, if by chance any of these rules regarding the chanting of mantras is broken, one should remember the mantras composed of Lord Vishnu's holy names, or simply remember the inexhaustible Lord Vishnu. जब करते समय कोई भी अपराध हो जाए, जो बताए गए पहले, हमने सुने दोष, सबसे पहले तुरंत क्या करें? और ये समझ जाएं, ये जो मैं जब कर रहा हूँ, ये साक्षात भगवान विष्णु कृष्ण नाम बिल्कुल अभिन्न है और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा मन तुरंत भाव है, प्राचीन भाव। In this regard, there is that popular mantra, Om Apavitra Pavitra Hova Sarvavastrangato Piva Yasmare Pundarikaksham Sabhakyantara Antara Shuchihi. Whether one is in pure or impure state, if he remembers Pundarikaksha, the lotus eye Lord, he is considered pure. So, and sometimes we just chant this mantra, but this mantra is actually having instruction. And what is that instruction? Remember the Pundarikaksha, the lotus eye Lord, to get his glance. Whomever he sees is considered pure.
बहुत अच्छी बात कही जा रही है यहाँ पे। हम सब करते हैं, कितना ध्यान नहीं देते हम लोग आचरण करते हैं तो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम पवित्र पवित्र जो मंत्र बोलते हैं। ये मंत्र हमारे सभी इस दोष के प्रायश्चित को दूर कर देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आप कितने भी पवित्र हो, बाहर से अंदर से हर स्थिति में हम सब हो जाते हैं, अभी हम सब अभिषेक था। ये सब पवित्र अवस्था में अगर हम जिसमें निर्देश दिया गया वो ध्यान रखना है, वो क्या है कि पुण्यकाक्षी स्मरित, इसको स्मरण करना है भगवान की बहुत सुंदर जो अक्ष है, भगवान के मुखार भगवान के साक्षात रूप अगर मन में आ जाए उस समय, तो जो भी अशुचि है वो सब पूरी अवस्था से होता है। तो हम लोग कई बार मंत्र बोलते हैं लेकिन भगवान के इस निर्देश पर ध्यान नहीं देते, उस समय हमको भगवान को स्मरण करना है पुण्यकाक्ष को, तब हमारी सारी अशुद्धि की अवस्था शुरू हो जाए। Equally, this verse is saying, Yadi vayam lopa syajjapadishu japadishu katanchana vyahared Vaishnava mantram smare va Vishnum avyayam. Remember the Vaishnava mantra or Supreme Lord. दो चीजें याद कर सकते हैं उस समय। एक तो हम लोग जो वैष्णव को प्रणाम करते हैं, वैष्णव मंत्र और विष्णु मंत्र, ये दोनों को स्मरण करें हम लोग भगवान और भगवान के भक्तों को, हमारी सभी अशुद्धि की अवस्था। Mantrarnava, in the Mantrarnava, it is stated, one should suspend chanting Japa if he sees, converses with, or even hears the voice of a fallen person or an outcast. Yeah, right. One should suspend chanting Japa if he sees, converses with, or even hears the voice of a fallen person or an outcast. जब भी कोई ऐसे पतित लोग साथ में आ जाए या उनकी आवाज में सुनाई पड़ जाए, उसमें तुरंत हमें जब बंद कर देना चाहिए। See, darshan, दृश्य। और कोई देखते हैं या कोई उनकी आवाज सुन पाते हैं, ऐसे पतित लोग भी आपको देख लिया वो कर रहे हैं, उस समय हमें जब रोक देना चाहिए। One should also suspend his chanting if he has to sneeze, pass air, or yawn. और जब भी डकार आए या छींक आए, उबासी और ये आता है तो उसमें जब वो राशि का उसमें अगर ऐसा आ रहा है तो आराम होगा, उसको उसमें आ रहा है। Before completing his japa, one should purify himself by performing either ajama, pranayama, or 6 kinds of asas, or by looking at the sun. तो सूर्य की ओर देख करके या न्यास प्राणायाम करके अपने आप को शुद्ध करके जप पे बैठ सकते। सूर्य बड़े पवित्र हैं, सूर्य को देख करके और जप पे बैठना है। Why is mentioning this achamam, pranayama, nyasa? Because at the end of mantra, if you chant 16 mantras, 16 rounds, your mind will be so much focused on one thing, and the effect is that sometimes he just wants to go completely opposite way. To, for example, read some news, do any prajalpa, just because it's so much intense activity, the mind goes to opposite direction. You just want, although it was a nice experience, but still of that much focus, you want relief from that. Therefore, achaman, pranayama, nyasas, if you know nyasas, if you have brahmana diksha or after jap. Yeah. जब के प्रसाद की बात चल रही है, जब कर लिया आपने तो करने का जब करने बहुत ध्यान से सब निर्देशन दिया इस प्रकार से, ये मन का स्वभाव है। कोई एक चीज अगर बहुत ध्यान से कर रहे हैं आप, जब जैसे उठते हैं तुरंत उसके विपरीत चीज करने का मन करता है। जब मेरा जब पूरा हो गया ठीक है, अब मैं कुछ देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, समाचार देख सकता हूँ, तुरंत उसके विपरीत मन भागेगा। इसलिए जब से तुरंत उठते ही तुरंत वहां पर नहीं आए, धीमे धीमे उस अवस्था से बाहर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्राणायाम, न्यास, सूर्य को देखना, ये हमें मदद करता है धीमे धीमे उस अवस्था को, जो विपरीत अवस्था आएगी उसको रोकने। ठीक है? और इसको देखने से
जब बंद कर देने से हम कुटी को छोड़ के क्या कुटी को धर के So you mentioned that while seeing such person, you ask this person, you should stop chanting. So chanting stop means just hold the beats and don't chant. And what to do? What do you need to stop the chanting? I mean, either this or fully stop chanting. Full stop. Or take, but it's not written. यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन जैसे अगर इसको हम जोड़ने पहले वाले नियम से, कि कभी ऐसे बंदे को देख लें तो उन्हें स्नान करना चाहिए। इस वक्त जब करोगे स्नान करके आए फिर जाओ। हाँ, ठीक है? दोनों को जोड़ लेना पड़ेगा। कहने बाद स्नान करना चाहिए। देख लिया तो जाओ दीजिए स्नान करें। Maybe it's in Sanskrit. Patitanam antyajanam darshane bhashane shrude kshute do bhayu ghamane jhrimbane japa utsrijet. Stop. और अगर हम पहले भी ध्यान देते उन्होंने बताया पहले कि हम ट्रैवलिंग करते हुए नहीं, वॉक करते हुए नहीं, और एक स्थान पर बैठ के करेंगे और स्थान खुला नहीं हो तो ऐसा आएगी नहीं, ये अवस्था आएगी। Praptav achamya chaitesham pranayamam shad angakam kritva samyak jape cheyam yadva suryadi darshanam. So we already explained this. It's just Sanskrit. But it's not saying anything more about stopping. If one happens to see a cat, crane, dog, shudra, ass, or monkey, then he should perform Achaman before continuing to chant Japa. So no chanting in Vrindavan. So many monkeys are so clever in Vrindavan. You know why? Because in zoo, monkeys are inside the cage. But in Vrindavan, they have put people into cage and they are outside. Everywhere, every house needs to have a cage. No? Right. So कोई ऐसे पशु को हमने देख लिया, गधे को, बंदर को, dog, ass, monkey. सारस को देख लिया हमने, बिल्ली को देख लिया हमने, इनको देखने के पश्चात हमें तो स्नान Achamanya. If one touches one of these, however, he must bath. So we can learn the Sanskrit names of these animals. Marjaram. Dog also? Yeah, it's written dog. Marjaram is cat. Kukutam is a cock. Then Krauncham, crane. Shwanam, dog. Shudram. Karam, ass, kapin, monkey. No? Drishtva acham yacharet, karma sprishtva, if touching, snanam vidiyat. Narada Pancharatra, in the Narada Pancharatra it is also stated, if one happens to speak even a single word other than his mantra while chanting, then he should rectify that fault by chanting Om. If one is obliged to speak, then he should perform Achamana and Pranayama once each. लास्ट में बताया गया कि अगर आपको जब करते समय पूरा ध्यान में मंत्र नहीं है और कुछ बोलना पड़े तो आपको ओम बोलना होगा और तुरंत आचमन करके आचमन है प्राणायाम करना होगा हर बार बिल्कुल करने होंगे। Why Om? Because Om is not different from Mahamantra and brings you to that state. It brings you very easily to that state of Prashanti Shabda. You just chant Om. It's very, very full of meanings, the Bija mantra. And Achaman and Pranayama also to purify the body and pranas. They circulate properly. तो आचमन प्राणायाम हमारे को पुनरुष्ट करते हैं
और भगवान गीता में कहते हैं कि वो वेदों के मंत्रों में ओम है, वो ओम से ओम महामंत्र और ओम से पुनः जो बीच में जो अवरोध आ गया था वो अवरोध की निवृत्ति हो जाती है, पुनः मुक्ति हो जाती है. Okay, we have 3 more verses before next section, then we'll stop. And so let's try to finish. Narada Pancharat, we said we'll just read Sanskrit of this one. Sakrit ucharite shabde pranavam samudirayat. Prokte chachamya manyapi pranayamam sakrit ucharet. If one indulges in idle talk during japa, then he should purify himself by performing achamana and the nyasa of bodily limbs. If you're not Brahman Dikshit, then you don't do nyasas. You want to translate? तो अगर जब करते हुए आप ईश्वर को आता है तो हमें आश्रय करना चाहिए और न्यास अगर आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं हैं तो आपको न्यास करना पता नहीं होगा कैसे करना. In case one sneezes or touches something abominable, should follow the same procedure. जब किसी समय छींक आ जाए या कोई ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए छू लिया हमने तो तुरंत हमें यही विधि को अपनाना पड़ेगा, इस विधि को दोहराना पड़ेगा. Bahu pralape means that a lot of pralapa. Chachamya means doing achaman. Nyasyangani tato chapet. You know, just one more, maybe you don't know what are. Do you know what are nyasas? न्यास को नहीं पता है. These are who knows or who doesn't know? Who don't know. Who don't know, okay. You know, this for me it's so interesting because, you know, in other traditions people they have this and everything taken from Vedas, like in Christian tradition they say in the name of Father and in the name of the Son and the Father and Holy Spirit. This is actually Vedic. But picked up, for example, when you do any sankalpa, for example, yeah, some parts I will not mention, but it's like this. Just one moment. Om Narada, just one moment. Om Narada Rishihi Gayatri Chandaha Sakalaloka Mangalanandatanayat Devata Vijaya. I'm skipping some parts of mantras just. Vijaya Namaha Krishna Durga Vishtatri Bimatarte Viniyogaha. And then you do pranama mantra. So all these are picked up from Vedas, Nyasas. Yesterday we spoke about how Muslims are strict in that. But they follow indirectly Vedic tradition in many ways. Same with Christians, like from where is that? From where is rosemary or tasbih? From Vedic tradition. इस प्रकार से न्यास को देखते हैं बाकी लोग जो बाकी समुदाय के लोग हैं वो भी लोग करते हैं हमारे ईसाई समुदाय ये सब ये न्यास होता वेद से आया है. और जो बाकी हमारे जो भाई लोग हैं वो तस्वीर की माला रखते हैं, ये माला रखना भी तस्वीर ये सब वैदिक संस्कृति से आया है. And what we do when we chant like that, we remember that this mantra was received by that Rishi. He chanted in this chanda, and the devata of that mantra is such and such. And therefore we touch different places. No? The Rishi who enlightened us, the chanda which we chant, and the Lord, the devata in the heart. तो उन ऋषि का नाम लेते हैं जिनसे मंत्र का उन्होंने सबसे पहले उच्चारण किया, उनका नाम लेकर के कैसे उन्होंने उसका उच्चारण किया, उसकी जो देवता है मंत्र के ऋषा देव को प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण करते हैं. इसलिए जगह से मुद्रा Shutte pyevam tata sprishya stananam sparshane bhavet. We already explained that. And one more verse. Kim chanyatra. Elsewhere it is stated, when the string of the mala becomes too frail, one should replace it with new string and chant his mantra 100 times. If one accidentally drops his mala, he should chant 100 extra mantras. Remember, this is in context of prayashchitta, atonement. तो उस समय 100 नाम हमें अलग से करना चाहिए. 100 माला, 100 names.
You look scared, Prabhu. I did name sir. You're trained. तो 100 मंत्र और जो है आपको जपना चाहिए। कभी आपकी माला जब करते करते बीच में थोड़ी टूट जाती है, बहुत साल हो गए माला टूट जाती है, तो आप दूसरी माला बनाएं। अगर बीच में करते करते टूट रही है तो 100 माला 100 नाम और स्टार्ट करें, 100 महामंत्र से स्टार्ट। ये नियम होता है। So if one accidentally drops his mala, he should chant 100 extra mantras. If the mala comes in contact with something abominable, extra 108 rounds. I'm adding, just to make it funny. If the mala comes in contact with something abominable, one should first wash it and then chant 108 extra what? Mantra. और माला हमारा संजय कर रहे होंगे, कुछ हमारा किसी ऐसे संदर्भ में आ गया जो अशुद्ध वस्तु है, जो उपयुक्त नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसके संबंध में माला स्पर्श कर गया, तो पहले माला को शुद्ध करें, और उसके पश्चात 108 महामंत्र एक माला पूरी हमें फिर एक्स्ट्रा राउंड करना है। हमारी गलती से ऐसा हुआ, ये प्रायश्चित है, ये सब प्रायश्चित के बाद। Om Tat Sat Shri Krishna Chaitanya Arpanamastu. यहाँ पर आज लोग ये भाग समाप्त करते हैं, बहुत विस्तार में भाग नहीं करके भाग समाप्त हुआ है, और भाग हम लोग समय मिलेगा, हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग सारे आएंगे तपस्या में, और ये जो प्रोग्राम ये तो हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो नहीं जब ये हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे एक प्रश्न नाम अपने आता है। The last question that you mentioned, that we should not cross the shadow of auspicious trees, like banyan, right? So if at all it happens, what is the action? I don't think it's mentioned. So. उसका प्रायश्चित यहाँ पर दिया नहीं, इस शास्त्र में नहीं दिया गया। But you see, the general prayashita is just to continue of remembering the Lord Pundarikaksha and chanting mantra. उस अवस्था में भी हम क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा आपको मालूम पड़ता है कि आपने त्रुटि की है, तो तुरंत ही ये मंत्र का उच्चारण करें, ओम अपवित्र पवित्र हुआ, और तुरंत भगवान को स्मरण करें और दर्शन हो सकते। ये दो करने से हमारी जो अवस्था हुई थी, उससे प्रायश्चित मिल जाएगा। For offenses or anything in devotional service, the only prayashita is always extra devotional service. No other atonement is there, upaya. क्योंकि भक्ति में जीवन में अगर हमसे कोई अपराध हो जाए, तो इसका और कोई विशेष प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित और भक्ति बढ़ाएं, और भगवान के नाम का जप करें, भगवान और स्मरण करें, यही प्रायश्चित और कोई प्रायश्चित। ठीक है कोई? यस if there is anything negative during the time, I didn't hear. if the death happens in family, there is what in that time the japa how we should involve. Japa is not the part of those public appearances. The person should go public during the period of mourning, because he is not being in a, in a pleasant mood to see the Lord, because he is in grief of losing beloved person, and therefore he goes to temple in improper or impure state of mind. So that's for the external appearance, but for your japa, you chant your japa, as we said, should be secretive anyway. It's not public, it's private practice. Therefore, it's good to chant privately. तो उस समय हमें पूर्ण रूप से जब किसी घर में बैठे हो जाए, सावन हो जाए, तो हमें मंदिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत शोक के अवस्था में उसमें हैं, और लोग भी सब शोक के अवस्था में हैं, और सबके समक्ष जाके जप ना करें, एकांत में अपना जप नहीं करना चाहिए, जप करना चाहिए, जब किसी अवस्था में नहीं। और कोई जिज्ञासा नहीं। Thank you very much.
for a very wonderful development session. I have just one note of thanks for you. That while I have noted down many of these doshas, and then I was thinking how I can avoid this rather than even going to Prashita, how we first just don't commit as much as possible. So then I got the answer by thinking that if we do our Japa in Brahma Muhurta, then super majority of these doshas can be avoided. So that gives me more inspiration only through you, because Krishna speaks to devotees, that whatsoever happens in life, whatever circumstances I am in, I should never need a practice of having japa in Brahma Muhurta. If my circumstances goes adverse, like night duty or whatever, anything can happen in life. Still, that morning japa is my priority. Somehow I pray and organize my things where I start my japa at 4:15 every day. So then I see that all the doshas, most of them, really we can approve from the root itself. We don't love it. Right. So thank you for inspiring for morning japa. Brahma Muhurta japa. We will try. Actually, it will be written Japa Kala, one of the next sections. Japa Kala. Thank you for sharing. और बताया बहुत सुंदर रूप से बताया कि आपने जो कुछ बताया है कि दोष को हम लोग अगर हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप करें तो लगभग सारे दोष को हम लोग निवृत्ति कर सकते हैं। तो भी करने के मैं प्रयास करता हूँ और हमेशा करते हैं, सबको सहाय करते हैं, तो सदैव प्रातः काल में जप करते हैं कि कैसी भी स्थिति हो, चाहे हमारी रात में ड्यूटी हो, तो भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपना दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जप है उसमें मैं जप करूँ, जिससे कि सभी दोषों के जो जड़ हैं उनको मूल से ही निकाल सकूं और कभी भी ऐसे दोष का प्रयास नहीं करना पड़े, दोषी हमसे ना हो, ये बनाना चाहिए। तो हमने जो हमको बताया हमको सबको सहायता किया कि हम उसका प्राप्त किया जाए। और फिर माता जी कोई क्वेश्चन So it was person asked by Krishna Guru, so how the time in the morning. So if we get up, we take our bath, all we do so then we start our chanting. So time may be a little early than the Brahma Muhurta even. So is that forbidden or we can? No. Actually, even Krishna was waking up very, very early. So he was waking up 3 hours outside. So that's, don't go for japa walk or anything like that at that time. So it is the most auspicious. So Srila Prabhupada used to wake up very early. Most of acharyas used to wake up very, very early. So that's the best time to finish rounds before Mangalarati, and then after that you study. That's most ecstatic. देखिए प्रश्न को असर देखिए आप, प्रश्न का असर क्या है, हम लोग समझते हैं कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जब किया जाए। यहाँ पर प्रश्न है हमारे कुछ महानुभाव का, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही हम दर्शन करते हैं, क्या ठीक है? प्रश्न लेके आए तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 90 अध्याय लास्ट चैप्टर, उसमें भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला के बारे में बताया, नित्य कर्म के बारे में, क्या करते हैं भगवान श्री स्वयं, वो स्वयं 3 बजे उठते हैं भगवान श्री कृष्ण और अपने ऊपर ध्यान करते हैं, आखिरी अध्याय 10वें स्कंद, और अपने ऊपर ध्यान करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी नित्य क्रिया बताया गया, द्वारा क्या करते हैं भगवान द्वारा। तो इस प्रकार से बताया गया कि भगवान जी स्वयं उठते थे, पहले उठते थे। तो वैसे अगर हम कुछ सहायता करते हैं सबको और सुबह सुबह उससे पहले करके अपना साधना करते हैं, तो करने की बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ यात्रा के समय जैसे अभी 2-3 दिन तक ट्रेन में तो वैसे भी असली क्या होता है
बहुत व्यवहारिक है. Very practical question. While traveling, sometimes we have 2-3 days in the train journey. We are not very clean actually. We are supposed to be the way we are supposed to be. But in that situation also, because we have to chant our rounds, so we keep on chanting. Also, dosha of not japa while traveling on this. That also is covered. So during traveling time, what? But as we said, you follow as much as you can. You can't just neglect all rules, but you can't follow most. But you are aware. This is not my permanent state. तो ये तो आपको प्रूव करने की व्यवहार देखना व्यवहारिक उससे कैसे प्रैक्टिकली तो उस समय तो ट्रैवलिंग करनी है आपको ट्रैवलिंग अवॉइड नहीं कर सकते तो उससे जब करना है जब हर शाम करना है वो आइडिया नहीं है करना पड़ेगा तो उसको कर सकते हैं जो अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पर बैठे प्रभुजी But they will block roads. प्रभुजी कह रहे हैं कि We have to go, Prabhu. They will block roads, Prabhu. Really? Really? Do you promise this is your last question? Yeah. This is not question, this is my doubt, Prabhuji. Oh. How changes life